Hello students, welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying our chapter current electricity. Okay, in the previous video we have seen how to find the resistance of a particular carbon resistor where the color coding is given to us. Okay, now here we will see another topic, that is the combination of resistors. Okay, so here we have the first case, that is the series combination, series and parallel. I think you are aware about this combination which you have already studied in class 10th. Okay, here we have three important points related to the series combination of resistors. Okay, the first point is current is same in every resistor. This is very important point. सबसे पहले देखते हैं अपन कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही ये कॉम्बिनेशन होता क्या है. दिस इज दी एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ दी रजिस्टर्स. मतलब अगर हमारे पास ये एक रजिस्टर है, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर. ओके, हियर वी हैव द रेजिस्टेंस R1. अगर यहीं पर हम सेकंड रजिस्टर इसमें कनेक्ट करते हैं, दैट इज दी सेकंड रजिस्टर हियर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दी रजिस्टर्स. ऐसे ही हम यहाँ पर तीसरा एक और रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R3. And if all these are connected end to end, in that case current is same in every resistor. Okay, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, if suppose the current I is flowing through R1, तो यहाँ पर R2 के अंदर भी I ही होगा और R3 के अंदर भी I करंट ही होगा. Okay, and in the case of series combination we are connecting it with a battery or we are applying the potential to the extreme ends of the combination. So यहाँ पर जो potential difference होगा, this potential difference will be V. This point is A and this point is B. Okay, understood this first point, that is the current will be same in every resistor. Second point, that is voltage across resistor is directly proportional to its resistance. अब ये कैसे, we have this formula V is equals to I R. Okay, now in this formula if I am keeping this I as constant, because in each and every resistor the current is constant, in that case can I write V is proportional to R. मतलब यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R. मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन दिस केस द वोल्टेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर. तो यहाँ पर अगर वोल्टेज कितना है V1, यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा V3. ओके, हियर बिकॉज ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, और अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, दैट इज whatever the potential we have applied, total potential V, that is equals to the combination of all these potentials, that is V equals to V1 plus V2 plus V3. Okay, now this potential that is equals to the product of current and the resistance. So for the total potential I can write V is equals to IR equivalent. मतलब यहाँ पर आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट होगा उसके अक्रॉस अप्लाई किया है, तो उस इक्विवेलेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, REQ, दैट इज R इक्विवेलेंट. ओके, इन द सेम वे अगर हमारे पास पोटेंशियल V1 है दैट इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I into R1. In the same way we can write V2 is equals to IR2 and V3 is equals to IR3. Okay, now we will put all these three values in this equation. So I can write I into R equivalent is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Okay, we can take here I is common and we can cancel it on the LHS side. So I can write here R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. So this is the equivalent resistance of the combination when the three or a number of resistors are connected in C. Okay, now here we have third point, that is the total resistance of circuit is more than the greatest resistance in the circuit. मतलब यहाँ पर इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की, उससे भी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, इस R इक्विवेलेंट की. So in order to understand this point, let us consider an example. हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं and they all are connected in series and their value is 5 ohm, 8 ohm and 10 ohm. Okay, now out of these three the maximum value is 10 ohm. Okay, now when they are connected in series the equivalent resistance will be, that is R equivalent is equals to 5 plus 8 plus 10 ohm. So here we will get as 10 plus 8 18 plus 5, that is 23 ohm. Okay, now here what is the meaning of this statement and how we can relate it with the example.
द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज मोर देन, टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 23 ओम, ये ज्यादा है, इट इज मोर देन किससे, देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है, दैट इज 10 ओम। मतलब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इवन मोर देन द मैक्सिमम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 10 ओम, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है वो उस 10 ओम से भी ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस topic. So this is all about the combination of resistors when they are connected in series. Now we have the second type of the combination, that is the parallel combination. Okay, in this parallel combination the voltage is same across every resistor. Okay, now before going on that the property, we will see that how this parallel combination is. In the case of parallel combination, across each and every resistor the voltage is same, or you can say the one end of all the resistors they are connected at one point and the other end of all the resistors they are connected at one point. So here if we have this resistor whose resistance is R1, we have another resistor whose resistance is R2, and we have another resistance whose resistance is R3. So one end of all the resistors they are connected together at one point, let us assume this point to point A, and the other end of all resistors they are connected to other point, that is point B. Okay, and we have applied the potential difference across these 2 points A, B. Okay, now we can see the first point, that voltage is same across every resistor. Okay, so whatever the potential difference we have applied across these 2 points, the same potential will be across each and every resistor. मतलब R1 के across जो potential होगा वो कितना होगा V, R2 के across potential कितना होगा V, and R3 के across भी कितना होगा V. Okay, and the current flowing through every resistor is inversely proportional to the resistance. अब यहाँ पर जो भी current flow होगा, because of the parallel combination, the current will be different in each and every resistor. R1 के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर current I1, R2 के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं I2, और R3 के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना I3. So this current divides in case of parallel combination, लेकिन in case of series what we have seen that the voltage divides. Okay, now here this current that is getting divided in all of the 3 resistors. Now this current flowing through every resistor is inversely proportional to the resistance. मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V is equals to I R. I can write here this I is equals to V by R. Now here this potential V that is constant across each and every resistor. मतलब जब यहाँ पर V constant होगा, so I can write this I is inversely proportional to R. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करंट डिवाइड हो रहा है किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया I1, I2 और I3 इसको डिवाइड कर दिया. Okay, now as all the current is getting divided, but the total current is equals to I, so I can write here this I is equals to I1 plus I2 plus I3. Okay, now this I from the Ohm's law I can write I is equals to V by R. So this is the equivalent or the total current. So I can write this I is equals to V by R equivalent. Okay, in the same way I can write I is equals to V by R1, that is for the resistance R1 this current will be I1. In the same way this I2 is equals to V by R2 and this I3 is equals to V by R3. I will put all these values here in this equation, so I can write V by R equivalent is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So I can write it as 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So in this way we can find the value of equivalent resistance when we have a number of resistors which are connected in parallel. Okay, now here we have the another point, that is the total resistance of circuit is less than the least resistance in the circuit. ये exactly opposite है जो हमने third point देखा था in case of series combination. और यहाँ पर क्या है, the total resistance of the circuit, जो equivalent resistance आएगा किसी भी circuit का वो कम होगा किससे, less than the least resistance in the circuit. सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसीडर अगेन एन एग्जांपल. हमारे पास दो रेजिस्टर्स है, एक की वैल्यू है 1 ओम एंड द सेकंड वन इट्स वैल्यू इज 2 ओम. ओके, जब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, आई कैन राइट इट एज 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2. यहाँ पर जो R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2. Okay, so I can take the LCM of these two, that will be 2. So I can write here 2 plus 1.
So I can write 1 by R equivalent is equals to 3 by 2. So I can write here this R equivalent is equals to 2 by 3, and that is equals to 0.66. Okay, so here what I am getting, the value of equivalent resistance, that is equals to 0.66. और यहाँ पर क्या है, the total resistance of circuit कितना है यहाँ पर 0.66, that is less than the least resistance in the circuit. सर्किट में सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, और जो इक्विवेलेंट आया वो क्या है सबसे कम वाले से भी कम होगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा रहेगा किससे, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा. Okay, so this is what about the parallel combination of resistance is. And remember here one thing, that in case of series combination the current remains same but the voltage divides and the total resistance is more than the maximum of the resistance. Okay, and in case of parallel combination the current divides but the voltage remains same and the equivalent resistance will be less than the smallest value of the resistance in the circuit. So this is all about the combination of the resistors, that is series and parallel combination.